Assalamu alaikum students. Welcome to the lecture number 22 for the subject of Introduction to Information Technology. In this lecture, we are going to discuss Microsoft Excel. We will discuss what is a spreadsheet, the main screen of Microsoft Excel. We will discuss the Microsoft Excel environment and its components. Then we have two concepts, workbook and worksheet. I will provide you examples to understand the difference between these, how we can manage sheets within a workbook, what are the cells and cell addressing and the file menu. So these are the different objectives of this lecture. Now what is a spreadsheet? A spreadsheet is a computer application for organization, for analyzing and storage of data in the tabular format. Just like in MS Word, we can write letters, applications, essays, blog posts. We can also use tables in Microsoft Word for organization of data, but the spreadsheet is an advanced software in which we store data in tabular format, and the main purpose for storing this data is to apply different calculations on these data. जो वर्ड में हम टेबल्स क्रिएट करते हैं उसमें हम डाटा राइट अप तो कर सकते हैं, लेकिन उस डाटा पे हम कैलकुलेशंस नहीं परफॉर्म कर सकते. लेकिन अगर हम स्प्रेडशीट की बात करें तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में हम टेबल्स में डाटा ऑर्गेनाइज भी करते हैं और उस पर कैलकुलेशंस भी परफॉर्म करते हैं. So spreadsheets were developed as a computerized analogs of paper accounting worksheet. तो मेन पर्पस जो स्प्रेडशीट का है वो अकाउंटिंग में है, क्योंकि हम अकाउंटिंग में बेसिकली क्या करते हैं, डिफरेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स लिखते हैं, उनको कैलकुलेट करते हैं और उनके रिजल्ट्स को जनरेट करते हैं. लेकिन क्योंकि वहाँ पर मैनुअल कैलकुलेशंस हैं, सो देयर आर चांसेस दैट आवर कैलकुलेशंस आर नॉट करेक्ट और वी फॉरगेट समथिंग. But a spreadsheet is in electronic format and it calculates electronically using the computer, so there are no chances of error. Now the basic flow of a spreadsheet program is that it operates on data and the data is entered in cells. यानी हमारे पास टेबल होगा, टेबल में सेल्स होंगे, हम हर सेल में डाटा लिखेंगे और फिर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर उन डाटा वैल्यूज़ पर फंक्शंस परफॉर्म करेगा. नाउ ईच सेल कैन कंटेन न्यूमेरिक डाटा और टेक्स्ट डाटा. हम फंक्शंस जो है वो न्यूमेरिक डाटा पर परफॉर्म कर सकते हैं और टेक्स्ट डाटा पर भी कर सकते हैं. नाउ हाउ वी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, वी कैन यूज़ फार्मूलाज ऑन सेल्स दैट कैन ऑटोमेटिकली कैलकुलेट सम वैल्यूज़ and displays the values on the basis of contents of other cells. यानी जो हमारे पास स्प्रेडशीट में सेल हैं उसमें टेक्सचुअल वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, उसमें न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी हो सकती हैं और हम इन दोनों टाइप की वैल्यूज़ पर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं. अब ये ऑपरेशंस हम कैसे परफॉर्म करेंगे, वी विल परफॉर्म दिस ऑपरेशंस यूजिंग फार्मूलाज. अब फार्मूलाज भी कहाँ पर अप्लाई होते हैं, फार्मूलाज आर आल्सो अप्लाइड ऑन द स्प्रेडशीट cells. Now what can we do with spreadsheet? We can manage our accounting tasks, we can control finance. Similarly in university we can use spreadsheet for marking student attendance. We can use spreadsheet to calculate the grades, the total marks or detail mark certificate of students. We can also create graphs using the spreadsheet software. Now the most popular spreadsheet software is Microsoft Excel. The most popular spreadsheet software is Microsoft Excel. So we will be discussing Microsoft Excel in this lecture. Now what is the main screen of Microsoft Excel? For example यहाँ से मैं Microsoft Excel को ओपन करता हूँ.
सो यहाँ पर आपको दो एरियाज नज़र आ रहे हैं, वन इज़ द लेफ़्ट साइड एरिया एंड द सेकंड वन इज़ द राइट साइड एरिया. द लेफ़्ट साइड एरिया कंटेन्स रीसेंट डॉक्यूमेंट्स जो मैंने रिसेंटली ओपन किए. द राइट साइड एरिया कंटेन्स डिफरेंट टेम्पलेट्स, ये बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह ही है जो टेम्पलेट्स बने बनाए फॉर्मेट है. देन यू हैव ए बटन हेयर दैट यू कैन यूज़ टू ओपन अदर वर्कबुक्स. सो आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ से रीसेंट डॉक्यूमेंट्स ओपन करें या आप किसी टेम्पलेट पर जाएं. फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव ब्लड प्रेशर ट्रैकर, वी कैन क्लिक ऑन इट. सो ये आप इजीली देख सकते हैं कि यहाँ पर हम पेशेंट का नेम लिख सकते हैं, उसका ब्लड प्रेशर लिख सकते हैं, एंड वी कैन रिकॉर्ड द ब्लड प्रेशर इन डिफरेंट cells, just like we have a cell for date, for time, for heart rate and for comments. Similarly, we can highlight high blood pressure values or we can highlight normal blood pressure values. So Excel में हम इस तरह की वर्किंग जो है वो इफ़ेक्टिवली कर सकते हैं. So this is the main screen of Microsoft Excel. Now we will look at the environment of Excel. For this we will create a new sheet and this is the main interface of Microsoft Excel. Now here are different components. First of all, you have a title bar that contains save button, undo and redo button. Then you have the document title or the workbook title you are working with, and then you have the help button, minimize button, restore button and the close button. So ये बिल्कुल क्लासिकल वर्ड की तरह है. Then you have ribbon that contains home, insert, page layout, formulas, data, review and view. These are different ribbon options. इनमें भी कुछ वर्ड वाली सेम ऑप्शंस भी होंगी और कुछ एडिशनल ऑप्शंस भी एग्जिस्ट करेंगी. Then we have view bar. We can view our sheet in a normal way. We can view the sheet in page by page format or we can view the sheet in page break view also. We will discuss how we can adjust page breaks. Then we have a bar for controlling the zoom. We can zoom in and zoom out. Now let us discuss some other components of the environment as well. You are seeing the numbers 1, 2, 3, 4, 5. These are the रो नंबर्स. जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्सेल में हम टेबुलर फॉर्मेट में काम करते हैं, तो ये जो आपको नज़र आ रहा है इट इज़ बेसिकली ए टेबल. सो इट कंटेन्स रोज एंड इट आल्सो कंटेन्स कॉलम्स. सो एवरी रो हैज़ ए यूनिक नंबर, एवरी कॉलम आल्सो हैज़ ए यूनिक नंबर. सो दीज आर द कॉलम आइडेंटिफायर्स एंड दीज आर द रो आइडेंटिफायर्स. नाउ व्हाट इज़ अ सेल? ये जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा है ये सेल, इसी तरह ये बॉक्स सेल है, इसी तरह ये बॉक्स भी सेल है. इन फैक्ट यू कैन से दैट एवरी बॉक्स इज़ अ सेल. जहाँ पर भी रो और कॉलम एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं? सेल. सो वी विल बी यूजिंग दिस सेल टू एंटर डाटा. फॉर एग्जाम्पल वी कैन राइट हेयर name, we can write CGPA, we can write name ABC and CGPA 3.25. सो ये बेसिकली हमारे पास बेसिक डाटा एंट्री है. जो भी चीज़ हम लिखेंगे वो सेल की फॉर्मेट में ही लिखेंगे. एंड देन वी हैव ए यूजफुल फीचर हेयर दैट इज सजेस्टिंग ए टैब titled as sheet 1 and there is a plus button. So as I have mentioned earlier that we have sheets and workbooks.
So in order to organize data, we can use both these functions. We will learn how we can use it effectively. Then we have a formula bar. You are seeing the word fx. Now this is formula bar. You can enter formula here to perform different calculations. For example यहाँ पर हम दो वैल्यूज़ लिखते हैं और यहाँ पर हम इक्वल साइन प्रेस करके फार्मूला बार पे जाते हैं, दिस प्लस दिस लिख देते हैं. सो आपको यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये मैंने फार्मूला लिख दिया. नाउ दिस इज़ द फार्मूला बार. सो दिस इज़ द बेसिक MS Excel environment. Now what is the difference between workbook and worksheet? मैं इस फाइल को सेव करता हूँ. I save it on desktop with the name of book 1. अब अगर आप देखें तो इसका नाम book 1 है. Now this is a workbook. The Excel file is a workbook. And what is worksheet? When you open the Excel file, you see the word sheet 1 here. This is worksheet. Now both these are helpful in organizing our data. We can organize our data effectively using the workbook and the worksheets. So let's have a look at the formal definition of a workbook in Microsoft Excel. A workbook is a collection of one or more spreadsheets or simply sheets. तो हम कह सकते हैं कि एक वर्कबुक में ज़रूरी नहीं एक ही शीट हो, एक से ज़्यादा शीट्स भी हो सकती हैं और हर शीट में सेपरेट डाटा हो सकता है. अब ये शीट्स हमें कहाँ से मिलेंगी? अगर इस वर्कबुक को हम देखें तो यहाँ से हमें ये जो एरिया नज़र आ रहा है जहाँ पर शीट 1 लिखा है, यहाँ से हमें डिफरेंट शीट्स जो हैं वो मिल जाएंगी. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये है ब्लड प्रेशर ट्रैकर. अब यहाँ पर आपको दो शीट्स नज़र आ रही हैं, ब्लड प्रेशर डाटा एंड ब्लड प्रेशर चार्ट. सो बोथ दीज आर बेसिकली वर्कशीट्स एंड दीज आर एग्जिस्टिंग in a single workbook. Now what is a worksheet? Inside a workbook there can be multiple spreadsheets. Each sheet can have its own designated purpose. Each sheet is also known as worksheet. So हम हर शीट को यूज़ कर सकते हैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी डिपार्टमेंटल स्टोर के लिए शीट बना रहे हैं या वर्कबुक बना रहे हैं तो उसमें हम डिफरेंट शीट्स बना सकते हैं, जैसे सेल्स की, परचेज़ की, फिर उसके बाद इनकम की, एक्सपेंस की. सो हम डिफरेंट चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं. सो दिस इज़ द बेसिक पर्पस ऑफ द वर्कबुक एंड द वर्कशीट. नाउ हाउ वी कैन मैनेज द वर्कबुक? देयर आर डिफरेंट टास्क्स दैट we can perform. The first task is add worksheet. How we can add worksheet? This is the book. Now you see there is a plus sign. When I press this sign, you can clearly see another tab is created with the title of sheet 2. So we have created a sheet in Microsoft Excel. So our Microsoft Excel workbook now contains 2 sheets and you can toggle between these sheets by clicking on the concerned tab. Now how we can delete a sheet? We can simply, suppose we want to delete sheet 1, we will open the sheet 1, we will right click the sheet 1 tab and will press delete. It will ask for confirmation. So if we press delete button, the sheet will be deleted. So आप क्लियरली देखें कि अब हमारे पास सिर्फ एक ही शीट बची है. Next we have copy worksheet. Suppose we have created a sheet and we want to use the format in others as well. So we can copy our sheets for this purpose. इसके लिए हम क्या करेंगे? हम शीट पर राइट क्लिक करेंगे. We will click on move or copy. It will ask for the sheet. अब क्योंकि हमारे पास शीट ही एक है तो हम इस एक शीट को कॉपी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल शीट्स हों
तो हमें यहाँ पर इसे बताना पड़ेगा कि हम किस शीट की कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं. वी विल सेलेक्ट द शीट, वी विल check the box create a copy and press OK. So you will see we again have two sheets, sheet 2 and sheet 2 bracket 2. It means that sheet 2 bracket 2 is a copy of sheet 2. Now how we can rename a worksheet? For renaming a sheet, single click on the sheet and that's the right click and go to the option rename. अब यहाँ पर आप कोई भी नाम टाइप कर सकते हैं जैसे सेल्स. इसी तरह इस शीट पर आप राइट क्लिक करें, रीनेम करें, यहाँ पर हम नेम ऐड कर सकते हैं परचेज. नई शीट ऐड करके हम यहाँ पर इनकम ऐड कर सकते हैं. नई शीट ऐड करके डबल क्लिक करके हम यहाँ पर एक्सपेंस की क्रिएट कर सकते हैं. फिर नई शीट क्रिएट करके यहाँ पर हम रिजल्ट्स की टैब बना सकते हैं. सो बेसिकली नाउ आवर वर्क बुक इज़ कंटेनिंग ए टोटल ऑफ 5 शीट्स. एंड फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर रिजल्ट्स की शीट को कॉपी करना चाहता हूँ. आई विल राइट क्लिक ऑन इट एंड गो फॉर कॉपी. नाउ इट इज़ आस्किंग फॉर मल्टीपल ऑप्शंस and I am going to make a copy of the result sheet. So I will select the result sheet, will check the box create a copy and press OK to create another copy of the result sheet. Next, how we can toggle among different sheets? We can simply click on the concerned tab to toggle among different sheets. So this was the basic sheet management inside a workbook. Now the next important concept is the cell addressing. Now how cell addressing works? In Microsoft Excel, cell addressing is very important. Without cell addressing we cannot do anything. For example, I go to this sheet and click on this cell. Now this cell has a unique address. It has a column number, it has a row number. But how we will specify the cell address? For specifying the cell address we use this format. First, at the first place we have a column ID and at the second place we have a row number. So the cell address for this will be A2. What is the cell address of this? First of all, write the column number, that is D, and then write the row number, that is 9. So this is the cell address for this cell. Similarly, अगर मैं इसको ओपन करूं तो यहाँ पर भी आपको इस सेल का एड्रेस अगर मैं पूछूं तो क्या है, B15. सिमिलरली इस सेल का एड्रेस क्या है, G24. सो दीज सेल एड्रेसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. जितनी भी हम कैलकुलेशंस करेंगे उसमें हमें सेल एड्रेसेस को यूज़ करना पड़ेगा. एंड एडिशनली इफ़ यू वांट टू विजुअलाइज द सेल एड्रेसेस, जस्ट क्लिक ऑन द सेल एंड लुक एट हेयर. दिस इज़ द सेल एड्रेस. आप इसको किसी और सेल पर क्लिक करें, सेल एड्रेस विल चेंज. सो दिस एक्चुअली शोज द सेल एड्रेस एज वेल फॉर द सेक ऑफ योर कन्वीनियंस. Next we have general things. We have the file menu that we can use to perform different operations. We have the home button to perform the basic formatting of our document, and then there is obviously the data entry. Data entry हम किस तरह से करेंगे? For example, यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बनानी है जिसमें स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट्स हों और उनके marks हो. We will write subject or course, we will write total marks and we will write obtained marks. So ये हमने लिख दिया. Now you can clearly see that this text is not fitting in this column, so you can drag the column
to increase its width. Similarly, you can drag this column as well to increase its width. So हम बेसिकली इनको ड्रैग करके इनकी विड्थ को इंक्रीज़ कर सकते हैं ताकि टेक्स्ट जो है वो प्रॉपरली उसमें फिट हो जाए. सो दिस इज़ बेसिक डाटा एंट्री. And here we have the formatting. We can bold the text, we can create italic text, we can underline the text as well, or we can change the font size also. So ये basic formatting. And now we have the file menu. The file menu is absolutely same as that of Microsoft Word. You have the information, you have the file information, the author information, who has modified. Similarly, you can protect workbook by encrypting it with password. You can create a new workbook. It also shows certain templates. Now note, I have connected to the internet, and when I click on the template, it asks for downloading the template. So आप templates को download भी कर सकते हैं. We have the open menu. We can open recent files. We can open workbooks from OneDrive and our computer. We can save our files to OneDrive or our computer. There are some recent folders. Similarly, we can create a printout of our worksheet. We can set the printer, the number of copies. We can perform different selections. When it comes to the lecture of printing, I will discuss different things that are useful for us. Then we can share the worksheet. We can email the worksheet as an attachment or as a PDF, as an XPS. We can export the sheet to a PDF or XPS document. We can change the file type to Microsoft Workbook 2007 format and 2003 format. Now what is the difference between both of these? When we talk about Microsoft Excel 2007 onwards, the file formatted is .xlsx. But when we talk about Microsoft Excel 97 to 2003, the format is .xlx. So ये आप सिंपल जैसे हमने क्लिक करके सेव किया था, आप इस तरह से फाइल टाइप्स को चेंज कर सकते हैं. Similarly, we have a special type that is CSV file, that is comma delimited file. Then we have the account option. We can change the theme of Microsoft Excel, or we can sign in to Microsoft Office, and then there are bunch of options for the environment setting. In the next lecture, we will discuss different ribbons and how we can do productive tasks using these ribbons.